Hello, everyone. Good afternoon. I'm Sayukta from beautiful Spotless Skin team, and I'm sure all of you must be keeping good health. You must have come across people, especially women, with brown color patches on their face. They look like freckles, like spots forming large flat patches. This is nothing but melasma. Melasma is a common chronic skin condition in India. According to a study conducted across 4 Indian cities reveals that more than 80% of the population presents skin color heterogeneity on the face, irrespective of age and gender. This heterogeneity mainly results from hyperpigmented spot and melasma. Indian skin tone is more prone to pigmentary disorders. It occurs mainly in women 90% and 10% of males of all ethnic and racial groups. Around 20 to 30% of 40 to 65-year-old women present a facial melasma. Melasma and hyperpigmentation are generally ignored as sign of aging and often misunderstood skin condition. Melasma sufferers have been misinformed about aspects of this very common hyperpigmentation issue. This can lead to frustrating setback in treatment. To avoid all these hazards and to keep you informed, today we have with us an expert, Dr. Lipy Gupta from Delhi. She has more than 15 years of experience in dermatology. Dr. Lipy Gupta has done her MBBS from the prestigious Maulana Azad Medical College and Lok Nayak Hospital, New Delhi. She pursued her post-graduation from the University College of Medical Sciences, New Delhi. Dr. Dr. Lipy Gupta's Skin Clinic has become the most trusted skincare clinic, which offers a wide range of clinical and cosmetic services. The clinic offers a wide range of advanced dermatology treatments for skin conditions, including psoriasis, acne, eczema, warts, melasma, mole removal, etc. Besides general dermatology, the clinic offers a wide range of cosmetic services like advanced chemical peels, vampire facelift, dermal fillers, thread lift, micro needling, etc. The clinic also offers body contouring procedures. A combination of these procedures provides the desired result and satisfaction to the patient. Dr. Lipy Gupta is one of those very few dermatologists in Delhi who has such vast experience, which gives an extra edge in providing an excellent result. With her expertise today, Doctor will enlighten us more on melasma and its management. A very warm welcome to you, Dr. Lipy Gupta. Thank you. Doctor, as we all know that melasma is quite common, especially in women and especially in our society, in our country, we see a lot of women with these brown color, freckles, patches on their face. First of all, doctor, what is melasma? Melasma is a brownish discoloration which classically develops on certain parts of the face, which includes the cheeks or the malar area, but it can also extend on to involve the forehead, the nose, and the upper part of the lips. Now, this is a problem in which there is increased melanin synthesis. It can be both epidermal or dermal. By epidermal and dermal, we want that epidermal is in the superficial layer of the skin, whereas dermal is slightly deeper in the skin. So depending on the intensity of the pigmentation and the location of the pigmentation, there can be a variation in this brownish discoloration to something which is lighter brown to something which is very dark. So there is, even in melasma, you can see different shades of pigmentation. So this is what melasma is actually. Right. So now at least we know what is melasma, but at the same time, doctor, we would also like to understand the causes of melasma. Melasma क्यों होता है? क्या वजह रहती है? Melasma is commonly happens when there is either a hormonal change, like in a lot of patients, they classically develop it during pregnancy when there is a change in the hormonal pattern. These days, we are also seeing a lot of patients to develop it around menopause, again because of hormonal changes. Along with this, certain thyroid disorders can cause melasma. If you are going outside in the sun, there is a lot of sun exposure, there is a lot of skin damage, and to add on, you are also using some skin lightening products, but you are not using the right sun protection. This can damage your skin layers superficially and trigger a pigmentation, which can increase melasma or trigger formation of melasma.
There are also other problems like hormonal medication, in which oral contraceptive is something which is quite commonly used, which can trigger melasma. So melasma can happen even with a genetic predisposition. Like in younger patients, the mothers have had melasma, and that's why it's the women, the daughters also have a tendency to develop melasma. Right. So a number of reasons are there. And as you said, sun is one of the major culprits. We'll also talk about it in detail. But before that, doctor, there are two terms. One is melasma, one is hyperpigmentation. बहुत ज्यादा common term जो आमतौर पर जिसके बारे में लोग जानते हैं वो है pigmentation या hyperpigmentation. Melasma as a term इतना familiar layman में नहीं है. तो ये दो क्या अलग-अलग चीजें हैं या ये एक ही है? हाइपर पिगमेंटेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि हमारे नॉर्मल स्किन टोन से कुछ भी डार्कर कलर की पिगमेंटेशन है. Now that can be after as a result of acne also. The acne marks have healed and they have left behind a brownish color. It can happen because of other disorders also, which could be a photomelanosis or a chemical damage or a contact allergy which has left pigmentation. So hyperpigmentation is a very broad term which covers all kinds of pigmentation. Whether it is melasma or it is any other form of pigmentation, it gets covered under hyperpigmentation. Also has a classical presentation. It has a classical area which is involved, which is the cheeks, upper end of the eyebrow, upper lips. So it has a classical distribution. That is, and it is one of the causes of hyperpigmentation. Right. Doctor, now talking about melasma, what are the risk factors? Who all are at risk? As you said, it may happen due to genetics or due to hormonal imbalance, etc. So, who all are there who are at risk for melasma? Whenever we are going out in the sun and we are not using a sunscreen, that is the first trigger factor. अगर हम धूप में जा रहे हैं तो इट इज अंडरस्टूड कि हमारी स्किन पे थोड़ा सा स्किन डैमेज तो होना ही है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हमारा सन एक्सपोजर कितना है, हमारी स्किन कितनी सेंसिटिव है. लाइक दे कैन बी सम पेशेंट्स हु माइट stay for prolonged hours in the sun and still not have a problem, whereas there can be some patients who go out in the sun for a very short time and they have a problem. Then medication, especially oral contraceptives, hormonal medications, thyroid disorders, genetic history. So all of this predisposes to melasma. Another common thing I'd like to discuss is बहुत सारे patients ऐसे होते हैं जो बहुत procedures कराते हैं जिसमें chemical peels हो गया, lasers हो गया, and procedures कराने के बाद भी they are not following a proper skin care. Then your skin has been superficial layer has been removed in a chemical peel. You are going outside in the sun and you may develop a melasma. So following a proper skin regime is one thing which will prevent you from developing melasma. Certain things are beyond our control, like let's say someone has a thyroid disorder. So only thing what you can do is control your thyroid. Genetics is something which you really can't change, but sun protection is something which everyone can follow. Right, and it can at least prolong melasma. अगर genetics की वजह से भी होना है तो हम at least उसको prolong कर सकते हैं. Right, तो sunscreen पर हम बात करना चाहेंगे. डॉक्टर, होता क्या है हमारी society में? I mean, the fact is that still in India, 67% of people are not yet using sunscreen as a regular skincare thing, right? बहुत सारे हमारी कंप्लेंट्स एक्सक्यूजेस है, हम बाहर नहीं जाते, हमारा ज्यादा सन एक्सपोजर नहीं है, मैं तो घर में वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, सो आई एम मोस्टली इन फ्रंट ऑफ माय लैपटॉप और आई एम वर्किंग इनसाइड द किचन, तो किचन में कहाँ धूप ज्यादा आती है, तो क्यों मुझे सनस्क्रीन की जरूरत है. वैसे तमाम जो कंप्लेंट्स है, क्या उसको लेकर आप कहना चाहेंगी? सन हमारे घर के अंदर भी कुछ हद तक होता ही है, बाहर तो है ही, लेकिन अगर आप अपने रूम में बैठे हैं और आपकी विंडो से लाइट आ रही है या फिर आप कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठे हैं, then there is a blue light emission which was actually there was a study which was done in COVID period because the amount of our time duration we were spending in front of laptops increased.
So this also causes pigmentation. Oh. Certain amount of UV radiation is also transmitted in your tube lights, your bulbs, and all things which are emitting light. अगर आप घर के अंदर बंद भी हैं तो आप कोई 100% सन प्रोटेक्टेड नहीं है. स्पेशली अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं पिगमेंटेशन के लिए तो आपका सनस्क्रीन यूज करना, वेदर यू आर इंडोर्स और आउटडोर्स, इट इज इम्पोर्टेंट. राइट और कई लोग ये भी कहते हैं कि सनस्क्रीन यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा स्टिकी फील होता है. आई स्टार्ट स्वेटिंग अ लॉट व्हेन आई यूज सनस्क्रीन और आई डोंट लाइक द वाइट कास्ट या फिर बहुत पैची लगता है. तो ये तमाम भी एक्सक्यूजेस और कंप्लेंट्स वी कैन सी लोगों के होते हैं. उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो सनस्क्रीन की इंडस्ट्री है, मैं ये कहना चाहूंगी कि दैट हैज चेंज tremendously in the last few years. So previously, when we also were introduced to sunscreen, it used to be a sticky kind of cream which was applied. Now we have a huge range which can be a matte finish, it can be a sunscreen which is totally silicone based, a gel based sunscreen can be there. We also have now water based sunscreen. So you tell the texture you want and we can give you a sunscreen which suits you. So this excuse was okay and we agreed to it few years back, but now with the advancements in technology, this should not be a problem anymore. And I think the right way to that is कि हम एक डर्मैट के पास जाएं, क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाएं. वो हमारी स्किन टाइप को समझेंगे, हमारे स्किन रिक्वायरमेंट, हमारे वर्किंग कंडीशन के हिसाब से एक सही सनस्क्रीन हमें सजेस्ट करेंगे. तो डेफिनेटली हमें ज्यादा आसानी होगी एक अच्छा सनस्क्रीन ढूंढने में. और जो लोग सनस्क्रीन रेगुलरली यूज करते हैं और जिन्होंने अपना वो परफेक्ट सनस्क्रीन ढूंढ निकाला है, वो कहते हैं कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. कई ऐसे लोग हैं जो सनस्क्रीन के अलावा कुछ अप्लाई नहीं करते, उनको लगता है यही बेस्ट है. तो जब तक आपको वो सही सनस्क्रीन नहीं मिल जाता, go and take advice from a dermat. Yes, doctor, you want to add something to that? We also have now tinted sunscreens in which there is a little bit of camouflaging or a foundation based texture mixed in it, which provides you with the full morning cream or a morning regime which you are looking at. So the basket from which you can choose a sunscreen is really huge now, and visiting a dermat to solve this problem should definitely be done. सनस्क्रीन पे चूंकि हम बात कर रहे हैं, बहुत और सारी चीजें भी हैं जो सनस्क्रीन में बहुत मायने रखती है. जैसे हम किस तरह से कितना अमाउंट अप्लाई करें, उसको लेके भी बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. कितनी बार अप्लाई करना है एक दिन में, बिकॉज रीएप्लीकेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट. उस पर भी हम चाहेंगे कि आप कुछ बात करें. When we stretch our 3 fingers, ideal sunscreen quantity is you are pressing your tube and filling these 3 fingers. That is ideal quantity for application. When we are applying a sunscreen, हमें ideally 20 to 30 minutes before going out in the sun apply करना चाहिए, because इतना time आपके sunscreen को आपके skin के ऊपर एक layer बना के उसकी protection करने में लगता है. अगर आप सनस्क्रीन बिल्कुल बाहर जाने से पहले लगाते हैं, उससे बेटर है कि आप थोड़ा 15-20 मिनट्स पहले लगाएं. And a sunscreen is effective for generally on an average around 3 to 4 hours. So अगर आपका sun exposure prolonged है, then you need to reapply a sunscreen. Right. तो ये अगर हम चीजें फॉलो करेंगे तो एक अच्छा प्रिवेंशन तो हम कर ही पाएंगे. राइट डॉक्टर? Yes, ma'am. ओके डॉक्टर, प्रेगनेंसी में भी हमने कई बार देखा है मेलाज्मा होता है. तो इज इट परमानेंट और इट गोज अवे पोस्टपार्टम? I would say that's a lovely question, because it's a common concern amongst pregnant women who develop or start developing the pigmentation. What happens is when the pregnancy gets over and the hormonal changes start getting towards normal, in most of the patients, melasma either goes completely or definitely reduces. And if you are following a skin regime immediately after delivery, the chances कि आपका melasma पूरी तरह चला जाए बहुत high है. So ideally a good treatment should be okay and you should get over with melasma post pregnancy. राइट. और खास तौर पे प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए प्लीज डर्मैट को दिखाएं. डोंट गो फॉर ओवर द काउंटर मेडिकेशन, डोंट गो फॉर जस्ट एनी प्रोडक्ट दैट कम्स योर वे, क्योंकि बहुत यस डॉक्टर, आई एम श्योर आपके पास इस पे बोलने के लिए होगा. मैं इस चीज पे एक बताना चाहूंगी कि हम जब किसी भी OTC प्रोडक्ट को लेते हैं, उस प्रोडक्ट में
तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं कॉमनली, हाइड्रोक्विनॉन, रेटिनॉइड एंड स्टेरॉइड. So that is very commonly popular as a OTC cream. The moment you start using it, you will get an excellent result because of the formulation. It will give you an instant result. But the moment you will discontinue using it, the melasma is going to come back with a bang. And repeated usage of this cream is going to thin out your skin. It is going to increase facial hair growth on skin. So these products should not be used. So ideally आपका melasma कम है या ज़्यादा है, आप किसी भी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना मेडिसिन मत लें. But the irony is हमारी सोसाइटी में because over the counter products are so easily accessible, हम लोग सबसे पहले केमिस्ट के या तो होम रेमेडीज अप्लाई करते हैं. मेलाज्मा के केस में भी हम कुछ पपीता लगा लिया, कुछ लगा लिया, otherwise we'll go to the chemist shop, ask for a cream. और जैसा कि आपने कहा, वो cream initially they work like a wonder cream, और हमें लगता है कि बस हमें वो चीज मिल गई है जिससे हम अपने मेलाज्मा को ठीक कर सकते हैं. बट लेटर ऑन जब चीजें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जब तक हम एक डॉक्टर के पास पहुंच पाते हैं, तब तक पता चलता है कि अगर हम पहले आ गए होते तो बहुत इजीली ट्रीटमेंट हो सकता था. बहुत लेंदी हो जाता है. तो क्या ये बात सही है डॉक्टर कि अगर हमें मेलाज्मा इनिशियल स्टेजेस पे है और हम एक डॉक्टर के पास गए एंड या फिर हम खुद से बहुत सारे हिट एंड ट्रायल्स करके ओवर द काउंटर मेडिकेशन के बाद डॉक्टर के पास गए, तो ट्रीटमेंट की लेंथ पर इसका असर पड़ता है? अगर हम पहले ही चले जाते तो जल्दी हो जाता? बिल्कुल पड़ता है, बिकॉज जब आप एक ट्रीटमेंट ऑलरेडी घर पे लेके गए हैं या आपने केमिस्ट से ट्रीटमेंट लिया है और वो सक्सेसफुल नहीं रहा है, आप तब गए हैं, आपने इस ड्यूरेशन में अपनी प्रॉब्लम को इंक्रीज किया है, आपने इस ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ अपने फेस पे लगाया है विच माइट हैव इरिटेटेड योर स्किन. सो आपने अपनी प्रॉब्लम को इनफैक्ट इंक्रीज करा है. आपने सन प्रोटेक्शन यूज करा है, नहीं करा है, बिकॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ सन प्रोटेक्शन हैज नॉट बीन एक्सप्लेन टू यू. So all of these factors make a difference. कई बार कई पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो काफी मेडिसिन लगा के आते हैं और जो काफी महीनों तक सेल्फ केयर कर चुके हैं. उनका स्किन ऑलरेडी इतना थिन हो चुका होता है स्टेरॉइड्स लगा के कि हमें कुछ दिन, एंड द क्लासिकल प्रेजेंटेशन इज दे से कि हमें जब भी लगता है हमारा पिगमेंटेशन बढ़ गया है, हम 3 दिन क्रीम लगाते हैं और वो गायब हो जाता है, बट फिर से आ जाता है. So then we need a time period to repair that damage and then treat the pigmentation. राइट. तो मेलाज्मा एक बैक सीट पे चला जाता है. पहले तो जो प्रॉब्लम हम क्रिएट करके गए हैं सेल्फ ट्रीटमेंट से, उसे ट्रीट करके स्किन को ठीक एक नॉर्मल उस पे लाना पड़ता है, फिर पिगमेंटेशन या मेलाज्मा का ट्रीटमेंट चलता है. डॉक्टर, एक और चीज हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, वो है आस्किंग अ फ्रेंड ऑफ फैमिली. मान लीजिए मेरे किसी फ्रेंड को हुआ था, उसके पास जो प्रिस्क्रिप्शन है, उसने जो क्रीम लगाया था, they'll pass it on to others. So that is the way we kind of help to serve our society. लेकिन उसका असर आई एम श्योर बहुत अच्छा नहीं होता. So why it is important to only go and consult a dermat and not going by what your friend have done or your relative have done? Ideally, every treatment for every individual is a customized treatment. हम जब किसी पेशेंट को मेलाज्मा के लिए देखते हैं, हम आपकी हिस्ट्री सुनते हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि आपको मेलाज्मा क्यों हो रहा है. आपका मेलाज्मा का कॉज आपके फ्रेंड से डिफरेंट हो सकता है एंड अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट हो सकता है. सो इट इज नॉट लाइक अ ब्लैंकेट रूल, इट्स नॉट लाइक अ कोविड प्रिस्क्रिप्शन कि सबको एक ही मेडिसिन देनी है. इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड इट्स समथिंग व्हिच इज you are going to treat your skin eventually. So you cannot आपका फ्रेंड का हो सकता है कि उन्होंने बहुत मेडिसिन यूज कर ली हैं, तो उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिम दे रखा है, whereas आपकी स्किन सेंसिटिव और ड्राई है. So that prescription may not be right for you. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो क्रॉनिक मेलाज्मा के पेशेंट्स हैं वो पूछते हैं, that will it ever go away permanently? It will not go permanently. Okay. You can see melasma is something which especially may stay with you. If you are an intelligent patient, you should know how to manage it. By managing it, I mean use your medicine sincerely, use a sunscreen regularly. Now, sunscreen should become a part of your life. And whenever needed, whenever you feel the melasma is increasing, you can opt for some procedure like a peel or a laser in case your melasma is not getting control on medication.
But Right. if you will think that I am going to take treatment for 2 months and I'll then stop everything, that will not happen. हम्म। अच्छा डॉक्टर, क्या मलाज़मा ओवरनाइट बहुत ज़्यादा होता है और या फिर ये धीरे से बहुत कम पैचेस के साथ शुरू होता है और धीरे-धीरे बढ़ता है? क्योंकि अगर ये धीरे-धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है, तो डेफिनिटली हमारे पास टाइम होता है। आई मीन इफ वी गेट टू सी एनी पैचेस, एनी साइन्स, एनी सिम्पटम्स, एट लीस्ट वी कैन गो अर्ली टू कंसल्ट अ डॉक्टर। मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी कि हमारी जो स्किन है वो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स की एक रिफ्लेक्शन है। राइट। आपके पास कोई अक्यूट स्ट्रेस हो सकता है लाइफ में, तो आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स कैन एग्रेवेट वेरी सडनली आल्सो, whereas because of chronic sun exposure and other factors it can be very slow also. So it can happen in both ways. You can have a sudden increase in melasma and it can be very very gradual over time. In most of the patients we see a very gradual increase in melasma, whereas in some people we do see that there has been a sudden increase. आपके घर में किसी की डेथ हो गई है, आप बहुत एक इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, वो भी आपके मेलास्मा को बढ़ा सकता है। बिल्कुल। ट्रीटमेंट पर भी हम बात करना चाहेंगे। हमारी एक व्यूअर भी हैं, पूर्वी मेहरा, वो भी पूछ रही हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या कुछ अवेलेबल है? और सबसे पहले तो डॉक्टर, जब एक पेशेंट आपके पास आता है, तो क्या जस्ट बाय क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन यू कैन से कि हाँ, ये मेलाज़्मा है या कितने लेवल तक पहुँचा है, और कुछ टेस्ट भी कराने पड़ते हैं? हमें जो टेस्ट कराने पड़ते हैं वो बेसिकली हार्मोनल प्रॉब्लम्स को रूल आउट करने के लिए ही कराने पड़ते हैं। वी डोंट नीड अ टेस्ट टू डायग्नोज और कंफर्म मेलास्मा। We just do a test to find out if there is something, some other thing which is associated with melasma. So that's the first point. Now, when a person comes to us, we can diagnose melasma depending on the patient's history and what kind of skin type, what is the intensity of melasma, what products the patient is already using, whether the patient is using a sunscreen or not, the prescription is formulated. ओके। और उस हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन होता है। प्रिस्क्रिप्शन में मतलब नॉर्मली जो मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसमें क्या कुछ होता है? क्या टॉपिकल एप्लीकेशन होता है या ओरल मेडिसिन्स भी होता है? क्या कुछ होता है डॉक्टर? हमारी एक प्रिस्क्रिप्शन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्किन लाइटनिंग क्रीम्स, एंड आजकल मोस्टली सारे ही डॉक्टर्स हाइड्रोक्विनोन फ्री फॉर्मुलेशंस लिखते हैं। देन अ सनस्क्रीन व्हिच इज इम्पोर्टेंट। We can also have some oral antioxidants, vitamin C containing, glutathione containing products which will improve melasma faster. So मैं प्रिस्क्रिप्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी: सन प्रोटेक्शन, ओरल मेडिकेशन एंड स्किन लाइटनिंग एजेंट्स। इसके साथ में हमने ये देखा गया है कि अगर हम विटामिन सी सीरम्स देते हैं पेशेंट्स को लगाने के लिए, या इन जनरल ब्राइटनिंग सीरम्स देते हैं, दैट आल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ओवरऑल पिगमेंटेशन। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक डॉक्टर के पास जाएँ, और जितनी जल्दी जाएँगे उतना बेहतर होगा। तो प्लीज़ डोंट सेल्फ मेडिकेट और डोंट गो फॉर होम रेमेडीज़। गो टू द राइट पर्सन व्हिच इज़ अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। यस डॉक्टर, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? Also, it is important that when you are getting the prescription, you have to take time and understand the prescription before you start using it. कई इसमें products होती हैं जो melasma पर ही लगाई जाएंगी, and there will be some products which you have to use on full face. So common mistake what we see is sometimes आपकी जो spot cream है वो आप पूरे face पे भी लगा रहे हो. So understand your prescription before you start using it is one message which I want to give to all viewers. ओके, बिल्कुल। तो ये भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपने फेस की होगी, वो ये कि हम पहले अपने प्रिस्क्रिप्शन को समझें, जिस तरह से हमें उनका इस्तेमाल करना है, चाहे वो क्रीम्स है, मेडिसिन्स हो, जैसा डॉक्टर ने बोला है वैसे ही करें। एंड व्हेन इन डाउट यू कैन ऑफ कोर्स रिकन्फर्म इट विद योर डॉक्टर। तो प्लीज ट्रस्ट योर डॉक्टर, गो टू अ डॉक्टर, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। व्हाट हैपेंस डॉक्टर, अगेन वी हैव सो मेनी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स दीज डेज। हमारे क्वैक्स हैं, क्वैकरी इज रैपिडली इंक्रीजिंग, वी हैव पार्लर बेस्ड ट्रीटमेंट्स, और लोग डॉक्टर के पास जाने की बजाय, जाना अल्टीमेटली सबको पड़ता ही है डॉक्टर के पास, लेकिन हम पहले यहाँ सब ट्राई कर लेते हैं, विच आई फील इज एन अटर वेस्टेज ऑफ योर टाइम, योर एनर्जी, योर मनी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली योर स्किन, योर हेल्थ।
लेकिन somehow tendency है हमारे society में. So what's your take on these social media influencers? Ultimately, they are also endorsing something or the other. You know, they are also earning from that. और कई बार वो कहते हैं ना कि अधकचरा ज्ञान जो है वो बड़ा खतरनाक हो सकता है, तो वो भी उसके भी केसेस सामने आते हैं. So what's your stand on these things? There is a lot of information which is available on the web page and on many multimedia platforms. So Right. आप पहले उस information को gather करें, आप इस information को reconfirm करें before you start using it. Like let's say some common thing what we face is the use of niacinamide. So every young girl wants to use niacinamide without understanding that who's the ideal candidate for it. विटामिन सी, रेटिनॉल, ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो कॉमनली लेमैन भी आजकल यूज करना चाहता है, ये बिना समझे कि आपका स्किन उसके लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं है. तो यहाँ पे आपकी फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे विटामिन सी आपकी स्किन में एक्ने भी ला सकता है, आपकी स्किन को रेटिनॉल ड्राई भी कर सकता है, और किसी किसी में नाइसिनामाइड से एक्ने बढ़ भी सकता है. ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें विद टाइम जब आप उसको यूज कर लेते हैं तब आप रियलाइज करते हैं. कई बार आपने रेटिनॉल लगाया और आपने सुबह देखा कि आपका फेस पूरा रेड हो गया है. तो अंडरस्टैंडिंग योर मेडिकेशन इज इम्पोर्टेंट. दैट्स व्हाई आप इन्फ्लुएंसर्स की जो वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको जरूर गैदर करिए, बट उसको अप्लाई करने से पहले या तो आप उसको रीटेस्ट करिए कहीं पे जाके, या फिर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए. Many times we have patients who come to us who say कि doctor, we want to add a retinol in the prescription. So it is our duty to explain whether you can add or you can't add. Right. बिल्कुल, तो बिल्कुल हमें अपने डर्मैट से पूछना चाहिए और सेल्फ मेडिकेट ना करें, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो. वो इन्फ्लुएंसर्स हैं क्योंकि हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं. थोड़ा जो एक्सपर्ट है उनके पास जाना भी बहुत ज़रूरी है, जिनके सर्टिफिकेट्स आप इज़िली देख सकते हैं, जो क्वालिफाइड डर्मैट्स हैं उनके पास जाइए, डॉक्टर्स के पास जाइए. दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. यू विल एंड अप सेविंग योर एनर्जी, योर टाइम, योर मनी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली योर हेल्थ, योर स्किन. एक सवाल जो मैं पूछना भूल गई थी डॉक्टर, हम जब सनस्क्रीन की बात कर रहे थे और प्रेगनेंसी में मेलास्मा की बात कर रहे थे, कई बार हमने देखा है सनस्क्रीन पे लिखा होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स या लैक्टेटिंग मदर शुड नॉट यूज इट. तो ऐसे में अगर प्रेगनेंसी में सनस्क्रीन यूज करना है या मेलास्मा की प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जो सनस्क्रीन्स हैं वो ब्रॉडली दो तरह के हैं, एक केमिकल एंड एक मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन. The mineral based sunscreens are safe in pregnancy, lactation, and for children. So you should look for a mineral based sunscreen and you will not face this issue. Okay. One last question by Sohana Thakur. Will my melasma worsen over time or can it improve on its own? ये बहुत एक common question होता है लोगों का. आप अगर अच्छा ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूव ही करेगा, खराब नहीं होएगा. इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या यूज कर रहे हैं, आपको कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम तो नहीं है, आप कोई मेडिसिन पे तो नहीं है. तो आप इन चीजों को जरूर समझें. बट इफ यू आर टेकिंग अ ट्रीटमेंट फॉर मेलास्मा, लकीली वी हैव लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स नाउ अवेलेबल फॉर मेलास्मा, सो यू कैन डेफिनेटली मैनेज इट. Okay. And doctor, before we sum up the whole session, any take-home message for our viewers? Use sunscreen regularly and liberally. That's the first thing. Don't over apply your skin lightening medicines. They will cause more damage than benefit. And follow your prescription sincerely are the three key messages I like to give. Thank you so very much, Dr. Lipy Gupta, for your valuable time. It was a very informative session, and I'm sure अब हमारे जो viewers हैं वो समझ गए हैं कि मेलास्मा क्या है, क्यों होता है, और हो तो क्या करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है. So thank you so very much for your time. Take care. And viewers, thank you for your excellent participation in today's session. Stay connected to our beautiful Spotless Skin page. Stay healthy, stay happy, stay spotless. Goodbye. Thank you.